lesson about MX Excel shortcut keys, and in this video lesson you're going to learn how to write the data text into scientific notations, how to turn the data or numbers into scientific notations. तो इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किस तरह आपने जो है ना, तो इसमें आप लोग सीखेंगे कि किस तरह आपने डेटा नंबर टाइप किया उसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे चेंज करेंगे। तो शॉर्टकट की आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो सपोज यहाँ पर मैंने देखें डिफरेंट मैंने सेल्स में मैंने डेट्स नंबर्स टाइप किए हुए हैं डिफरेंट, ठीक है। कोई भी नंबर हो, डेट कोई भी नंबर रैंडमली आप टाइप कर ले, उसके बाद जो है उसको आपने क्या है साइंटिफिक नोटेशन में आपने चेंज करना है। You have type certain numbers or date and you want to turn that numbers or date into scientific notations. So for doing that you will have to press the shortcut key. You will have to press Control Shift plus 6 key. There is a mark on the 6 key that I forget the name of that mark. So you will have to press Control Shift plus 6 key and your data will be changed into scientific notation. Let's do it. सपोज यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर इस नंबर को मैं सेलेक्ट कर दिया और मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 की प्रेस करूँगा। उसके ऊपर एक मार्क है जो मुझे उसका नाम भूल गया, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 की फ्रॉम द कीबोर्ड। यहाँ पर देखें तो ये डेटा तो आपका साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। यू नो यू सी बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 की योर नंबर और चेंज इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अगेन दोबारा आपको आपको दिखा दो, मुझे वो नाम भूल गया उसका। कंट्रोल शिफ्ट और 6 की के ऊपर निशान है यहाँ पर। दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। अगेन आई एम डू सेलेक्ट दैट सेल नंबर एंड आफ्टर सेलेक्टिंग press control shift plus 6 key from the keyboard to change that data number into scientific notation. Here now you see the number or data is changed into scientific notation. Again दोबारा दिखा दूँ आपको कंट्रोल प्लस 6 की। तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 की है प्रेस करेंगे तो आपका डेटा जो नंबर है या डेट फॉर्मेट जो भी है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। तो असल में जो की के ऊपर वो सिंबल है उसका नाम भूल गया। तो 6 की आप देखेंगे लेस एंड ग्रेटर जैसे हम मार्क्स वैसे है, ये नाम भूल गया उसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आएगा। तो डू वॉच लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और बताएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, ठीक है। दोबारा आपको बता देता हूँ कि यू टू चेंज द नंबर ऑफ डेटा इनटू साइंटिफिक नोटेशन, press Control Shift and 6 key from the keyboard and your data number will be changed into scientific notations. Thanks for watching.